Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and I am your English teacher. Today, we will discuss about future indefinite tense. What is the future indefinite tense? A tense that describes about the action that will happen in future. So, in easy word, we can say that फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में होगा. हिंदी पहचान. वाक्य के अंत में अगर गा गे गी आए तो वह फ्यूचर टेंस होता है. जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, वह बाजार जाएगी, हम शाम को फिल्म देखेंगे, राम अपना काम समय पर करेगा, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, वह परीक्षा में फेल नहीं होगी, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम आज पढ़ोगे, क्या तुम दफ्तर नहीं जाओगे, क्या वह यह काम नहीं करेगी. तो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल थे हिंदी सेंटेंसेस की. मतलब अगर कोई हिंदी वाक्य है और उसका जो एंडिंग है वहां पर गा गे गी आ रहा है, तो दैट सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नाउ लेट्स गो द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Helping verb. There is only one helping verb. Will is used in the tense, but sometimes we use shall. लेकिन in the modern English, it will be like that. You can only use will and shall as a modal. We know that there are four types of sentences according to tense: affirmative, negative, interrogative, or negative interrogative. So we will start from affirmative. Like, it has structure of the sentence subject plus will plus base form of the verb. कहने का मतलब verb की first form and then object and then rest of the part that is remaining. Like this, we have an example. मैं दिल्ली जाऊंगा. I is our subject because मैं means I, and we will put auxiliary verb will and then verb की first form go and कहाँ जाएगा? To Delhi. It is a adverb of place. Now second sentence is वह मेरी मदद करेगी. Here वह is used for a female. So we will use a pronoun that is referring to female, that will be she, and then after we will put auxiliary verb will, then base form of the verb. मदद करना को कहते हैं help, then its base form is help, and इसकी मदद करेगी, that is our object me. Complete sentence will be help me. Now we will go through the negative sentences. The sentence structure of negative sentence will be subject plus will plus not, base form of the verb, and remaining part of the sentence. For example, I will not come today. मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा. In this tense, I is our subject, and then we will put will, then not, and then आऊंगा को कहते हैं come. So base form of the verb is come and वेहन today. Like this, वह सहमत नहीं होगा. वह यानी कि he, then we will put will, then not, and सहमत को कहते हैं agree. So he will not agree. Now let's go through some interrogative sentences. What is the sentence structure of this WH word? Will plus subject plus base form of the verb and remaining part of the sentence. Like this, क्या तुम मेरी मदद करोगे? This sentence has answer yes or no. As I have told in previous videos that if a question that have answered yes and no, then it will start with simple auxiliary verb. So here we will use auxiliary verb will, then our subject you, then base form of the verb help, and then me, that is our object. So complete sentence will be will you help me? Like this, one WH word sentence we will take. तुम कल क्या करोगे? Here our subject is you and क्या is coming in middle, then it's mean what. Then we will put auxiliary verb you will and then subject you and then base form of the do, that is do, and tomorrow is our adverb, so we will put here. So complete sentence will be वेहन will you do
tomorrow. Like this, वह स्कूल के बाद कहाँ जाएगी? यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ सेंटेंस के बीच में कहाँ आया है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम कुछ शब्दों में दे सकते हैं, न कि सिंपल यस और नो में। तो ऐसे सेंटेंसेस डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू होते हैं। तो कहाँ के लिए हमने लगाया वेयर, देन our auxiliary verb will, then our subject see and go and after school. Then complete sentence will be where will she go after school. Some negative interrogative sentences. क्या तुम कक्षा में नहीं आओगे? You know दोस्तों that क्या is coming in the starting of sentence, that means the answer of the question will be yes or no, then it will start with auxiliary verb. And in future indefinite, we use will as an auxiliary verb. Then there will be the subject you, and we will put note between the subject and main verb. What is the main verb here? Attend, यानी कि उपस्थित होना. तो हम लगाएंगे नोट प्लस अटेंड. हमारा जो ऑब्जेक्ट है द क्लास, तो इसके बाद कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं है, तो ये कंप्लीट बन जाएगा विल यू नॉट अटेंड द क्लास. लाइक दिस आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कल क्यों नहीं आओगे. देखो दोस्तों, इस सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ेगा. यस और नो से काम नहीं चलेगा. देन क्यों को कहते हैं वाई, देन वी विल पुट ऑक्सिलरी वर्ब, देन आवर सब्जेक्ट यू, देन नोट, एंड आओ को कहते हैं कम, एंड टुमारो. तो द कंप्लीट सेंटेंस विल बी व्हाई विल यू नॉट कम टुमारो. हियर आर सम Hindi to English translation exercise with explanation, so you can easily understand. Next, there is some adverb of time that you can go through, and it will help you to fill up the MCQ question and fill in the blank in competition exam. Here are more example of future indefinite tense. Then you can go through them, and in the last I have given you some MCQs and then translation exercises with answer key. So please make your sentences by yourself. Thank you.